Okay, so this is the last topic remaining. Using Dune theory, we try to explain some of optical properties of metals, okay, like reflectivities. So in last class, we have shown that the expression for AC conductivity, okay, expression for AC conductivity is given by 1 minus omega iota omega tau. Okay, this was the expression for AC conductivity. So just put it on one sign here. So differentiate it with this normal conductivity. So this is the expression for AC conductivity. Now where sigma naught is what? DC conductivity, static conductivity, electrical conductivity, static electrical conductivity. Okay, and we know what is the value of sigma naught. Sigma naught is what? Ne square tau upon m. Okay, and n is what? Concentration of electron. So conductivity depends on concentration of electron. Okay, so this was the conductivity expression. Now if you want to explain the optical properties, okay, so optical properties are basically combined effect of both electrical conductivity and dielectric constant. Okay, so let me write now electrical conductivity. Okay, so from here you can see that sigma is a complex quantity. Okay, so I can write, okay, so this is sigma naught. If you multiply this expression by 1 plus iota omega tau plus 1 plus iota omega tau, okay, so this will give me what? This will give me sigma naught 1 plus omega square tau square, okay, plus iota omega tau, okay, 1 plus omega square tau square. Okay, so it shows our conductivity is also a complex quantity. Okay, AC conductivity is a complex quantity. Okay, so it is a two. What thing? Times sigma naught in the second part. Sigma naught, yeah, sigma naught will also come. Okay, so iota sigma naught tau tau. Okay, so say this is sigma dash. Okay, iota sigma double dash. Okay, so sigma dash is basically your real part of the conductivity. Sigma dash is what? Real part. This sigma naught 1 plus omega square tau square. Okay, and your sigma double dash, okay, is your imaginary part. Sigma omega tau 1 plus omega square tau square. Okay, now whenever you are any physical quantity is complex quantity. Okay, तो कोई भी क्वांटिटी जब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है उसका मतलब क्या होता है? एनीवन? और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो उसका उसका क्या मीनिंग है? सर फेज पार्ट उसमें सर होगा। तो जनरली अगर आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है उसका इमेजिनरी पार्ट भी है, उसका रियल पार्ट भी है। ओके, तो अगर सिंपल भाषा में समझना है तो इसका मतलब ये होता है कि वो दो तरह के इफेक्ट दे रही है। आप कोई भी इनपुट दे रहे हो, ओके, वो इनपुट दो तरह के इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। ओके, वो हो सकता है कि जैसे इन द केस ऑफ कंडक्टिविटी व्हाट हैपेंस। ओके, सो ये सिग्मा, सो स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट मेटल्स, ओके, मेटल्स की बात करें और follows like any solid, okay, at low frequency it gives joule heating, it gives DC इफेक्ट ना। आप करंट फ्लो करोगे तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा और उसमें जूल इफेक्ट आएगा, जूल हीटिंग होगा। ओके, सो बेसिकली दिस इज अ रजिस्टिव इफेक्ट। ओके, so whenever you applying low frequency or DC frequency, then use your solid, okay, shows your resistive behavior. Okay, and when you apply same solid, when you apply high frequency, okay, that shows inductive effect. Okay, so same happens, it happens more in the case of metal. Okay, so I told you one time what is the difference between metal and inductor. Okay, but metal coil and inductor. Okay, so when you apply high frequency, this same metal, instead of resisting effect,
it will give you what? Inductive effect. Okay, so now what is sigma dash? Okay, so sigma dash basically is your resistive effect. Okay, so it represents okay, represents the in phase current which produces okay, the resistive joule heating, okay, while your sigma double dash, okay, sigma double dash is what? This is the pi by 2 out of phase, pi by 2 out of phase, okay, inductive current, okay. So this is the expression for conductivity. Now we see in limits, okay, when higher frequency and lower frequency, what happens? Okay, so Sir, हाँ, why inductor term here occurs? Sir? हम्म, इंडक्टर सर ये कैसा है सर? ये तो एक हम मेटल की बात कर रहे हैं. हाँ, तो मेटल ही तो इंडक्टर होता है। आपका जो इंडक्टर बनता है मेटल से तो बनता है, जो कॉइल बनाते हैं, ठीक है। तो जब हाँ हाई फ्रीक्वेंसी आता है, ओके भी, आपका नॉर्मल रेजिस्टेंस में क्या होता है, अभी नॉर्मल उसमें कैपेसिटेंस में क्या होता है, कैपेसिटेंस में क्या होता है वो आपका? वो हाँ, वो चार्ज प्लेट होता है. हम्म, भी आपका जो फेज होता है, रजिस्टर में तो वोल्टेज और दोनों दोनों एक ही फेज में होते हैं, ठीक है। कैपेसिटर में यस सर. करंट पीछे होता है, करंट आगे होता है पीछे होता है, कैपेसिटर में करंट आगे होता है, और हाँ ये इंडक्टर सर. इंडक्टर में करंट पीछे होता है, ये सर. ठीक है। यस तो वही वही फिनोमेना है। सो नाउ लेकिन सर वो इंडक्टर में वो जो कॉइल हम करते हो तो मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए करते हैं क्या चीज करते सर. हैं? अगर. हाँ. पूरा हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो हम कॉइल जो बनाते हैं वो तो मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए बनाते हैं ना, वो तो लेंस लॉ के लिए होता है ऑपोजिंग. मतलब क्या बताएं. मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, तो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है ना। इंडक्टेंस तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए टर्न्स देते हैं। ज्यादा टर्न्स देंगे तो हाँ, ज्यादा वो फ्लक्स मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। बट मतलब नॉर्मल मेटल हम अगर वो टर्न ना भी करे, मतलब वो ऐसा स्ट्रक्चर ना भी हो वो तो भी. इफेक्ट दे, चाहे टर्न करो ना करो, ठीक है। अगर आप लोहे की शीट भी ले लो, पतली शीट भी ले लो, ठीक है, हाँ. तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी लगाओगे तो उसमें इंडक्टर में इफेक्ट आएगा, ओके। और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर मेगा आर्ट्स में चले जाओगे तो आपको पूरा इंडक्टर ही दिखाएगा वो, ओके सर. ठीक है। सो दिस इज नाउ योर, इफ यू अप्लाई लिमिट्स, ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस, इफ ओमेगा टॉ, ओके, ओमेगा टॉ इज लेस देन 1, ओके। तो टॉ आपको पता ही है क्या होता है, टॉ की वैल्यू मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। टॉ की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻14 सेकंड्स होती है, ओके। सो अगर नाउ अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी है सपोज 10⁻, कितना, 10 है, 10⁻12 है, ओके, अप टू फार इंफ्रारेड तक है, अप टू फार इंफ्रारेड तक है ये। तो ये टर्म, ये कंडीशन वैलिड होगी, ओके। सो इफ दिस इज लेस देन 1, ओके, ओमेगा टॉ, तो व्हाट विल हैपन, दिस टर्म, ओके, दिस टर्म विल बी नेग्लिजिबल यहाँ पे, क्योंकि ओमेगा टॉ ऊपर है, okay, so this term will be negligible. So your sigma dash, sigma double dash is less than sigma dash, okay. Sigma dash is less than sigma dash, okay. That means your electron exhibit, okay, essentially इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन exhibit essentially resistive character, okay। लो फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन exhibit resistive current, okay। and this span, उसका रेंज क्या है, this span, okay, the entire familiar range, up to the up to up to the far infrared, to the far infrared, okay। तो फार इंफ्रारेड रेंज तक मेनली वो डीसी इफेक्ट दिखाएगा, ओके।
Now if we say second condition, if Sir, हाँ sir, can you explain this? What you have just written? भी मैंने ये तो बोला कि Just pan the- लो फ्रिक्वेंसी पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रजिस्टिव इफेक्ट दिखाएगा। जो करंट होगी ना वो सेम फेज में होगी मटेरियल के अंदर, तो आपका जो रजिस्टेंस तो दिखाएगा पर सेम फेज में है, Yes, तो वो रजिस्टिव इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, low frequency पे. लो फ्रिक्वेंसी पर रजिस्टिव इफेक्ट दिखाएगा, और फ्रिक्वेंसी जैसे आई होगी वो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। ओके, सो सिमिलरली इफ ओके हाई फ्रिक्वेंसी है, ओके, तो हाई फ्रिक्वेंसी मतलब कौन सी रीजन में, जब ये 10⁵ है तो ये एटलीस्ट 10⁻14 हो जाए, या 10⁻15 हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, टेरा हर्ट्ज अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट, ओके, विजिबल अल्ट्रा वायलेट रीजन। ओके, सो व्हाट विल हैपन, विजिबल एंड अल्ट्रा वायलेट रीजन। ओके, दैट मींस फॉर विजिबल एंड यूवी, ओके, दिख रहा है ना, visible and UV. Okay, so that in that case what will happen, your sigma dash will be less than your sigma double dash. Okay, and we can say that the electron show remains and essentially inductive character. इलेक्ट्रॉन के बाद क्या लिखा है सर? Show EVI. Evans. Okay, show. Okay, inductive current. So अब तो ये तो बात होगी हमारी इसकी किसकी, माना कंडक्टिविटी की। ओके, नॉट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के लिए हमको डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर भी चाहिए। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर वी कैन, सॉरी एक मिनट फिर, हाँ मुझे लीव करना पड़ेगा। ओके, आगे सर। हाँ, ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस योर दिस अदर प्रॉपर्टीज। ओके, अभी बोर्ड साफ दिख रहा है क्या? ये दिख रहा यस सर, है? साफ ही दिख रहा है। मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे छोटा दिख रहा है। ओके, सो ओके, पूरा नहीं दिख रहा है सर। हाँ, एक मिनट, पूरा नहीं दिख रहा है, जूम आउट हो गया अभी अभी ठीक दिख रहा है ना? ठीक है, सो नाउ वी वांट टू शो द डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, दिस इज डेल क्रॉस एच। ओके, वी नो दिस इज द माय गिव मी 1 minute. Okay, so now if you see the Maxwell equations, okay, so that is del cross H. Okay, del cross H क्या होता है? What is del cross H? जी J. Okay, so J and okay, so you can say this is drift तो शायद condensity. किसी का माइक ऑन है सर. हाँ, प्लीज योर माइक बंद कर दो। हाँ, बाकी साफ दिख रहा है, बोर्ड तो सही दिख रहा है ना? हाँ सर। So this is what your this is what, इसको जेडी क्या बोलते हैं, इसको इस करंट को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कंडेंसिटी। ओके, and this is your normal condensity. Okay, now I am writing, इसको पहले लिख देते हैं। ओके, जेडी को मैं पहले लिख देता हूँ, जेडी। ओके, and this is J. Okay, now JD is what? JD is your E del E by del T, correct? And this J is what? This J is your sigma E. Sigma क्या है आपका? AC conductivity. AC conductivity. Okay, तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इसको मैं लिखता हूँ EL. ओके, सो
IEL का मतलब क्या है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो पोलराइजेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। आप किसी में किसी चीज में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो, ओके, तो योर मटेरियल गेट पोलराइज and polarization say you got this term, okay, displacement current density. So now, and this is your normal current density, okay, because of electrons, okay. Now what I'm writing my E is what? E is E0 e power iota kx minus omega t, okay. Now if you differentiate this equation, this will give me del E upon del t, okay. So if you differentiate this one, this will give me iota omega your E, again E, okay, electric field. हाँ So सर हाँ, सर मुझे प्लीज बता दीजिए इक्वेशन वाला क्वेश्चन कहाँ से है? मैं कट कौन गया था थोड़ा। कौन सा वाला? ई ये सर वो ये ईएल इक्वेशन के है। बाद वाला। हाँ, यस सर यस so ये हम ले रहे हैं E का इक्वेशन है प्लेन वेव, ओके. Yes, Now sir. so now when you differentiating this plane wave, okay, तो क्या होगा? When you differentiating this plane wave, मेरे पास आएगा minus iota omega, okay. Now what I can do that this instead of this सर iota ये omega, ई नॉट होगा ना सर, माइनस आयोटा ओमेगा ई नॉट. ये पूरा वापस ही आ जाएगा ना, तो ये पूरा टर्म तो वापस आएगा ना, इसको ओह डिफरेंशिएट या करोगे, या ठीक है. यस सर यस सर. So instead of d by dt, I can write what? Minus iota omega. Okay. आपको ये इसका इसका जो दिखने में साफ दिख रहा है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रहा? Yes, sir. नो सर Yes, sir. Okay. So this is why d by dt is minus iota omega. Okay. Now put this minus iota omega value here. So now what will happen? This del cross h. Okay. Or this is this del cross h. I can write. Okay. El de by dt. Okay. Now this is my sigma. Okay. AC conductivity. इसको मैं divide कर देता हूँ minus iota omega से. Okay. So if I'm dividing my minus iota omega, so I have to write d by dt also here. So I'm writing d by dt here. Okay. And that is there is electric field. So I'm writing this is electric field. Okay. Now I can write this del cross h is as EL. Okay. So now EL de by dt. Okay, so this is minus, so this will give me iota. Okay, iota square, iota cut jagah, iota sigma upon omega. This is AC conductivity and d by dt. Okay, so this will give you del cross h. Okay, del cross h equal to, if I take d by dt common, this will give me EL plus iota sigma. Okay, de by dt. Okay, so this is what? This is your this quantity. Okay, so this quantity is basically what your this is this Sir? one. हाँ बोलिए. So we started with del by del t and we reached to d by dt. How? Which one? This one. सर हमने del by del t से स्टार्ट किया था ना, और अभी हम d by dt पे हैं. इसको अच्छा इसको डेल बाय डेल्टी लिख दो इसको ना, वो उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, लिखने का तरीके में फर्क है. इसको डेल बाय डेल्टी कर दो सबको जहाँ पे भी लिख रहे हैं. ओके, सो दिस ऑल डेल ई बाय डेल्टी है. ओके, सो दिस इज डेल ई बाय डेल्टी. ओके, so now this is your complex dielectric constant. Okay, so EL plus iota. Okay, this upon frequency omega, this is your complex dielectric constant. Okay, now we have to analyze this complex dielectric constant. Okay, so I'm writing it here again. Okay, so I have this one EL, okay, plus iota sigma, okay, omega. Okay, frequency is my omega. Now I want to analyze this at a low frequency first. Okay, so if I want to analyze this for low frequency, दिखने रहा कैसे? E, okay, EL plus iota sigma upon omega frequency. Now I want to analyze this for limit omega tau, okay, less than 1. Okay, for low frequency limit. Okay, now I know what is my sigma conductivity, so I can write EL, okay, iota sigma is what? Sigma naught, okay, 1 minus iota omega tau, okay, upon omega. And this further I can write what? This further I can write N E square. Sigma naught value is what? Sigma naught value is E
okay, EL, okay, plus iota, okay, this will become n E square tau, okay, upon m, that is m omega 1 minus iota omega tau, okay, यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now we have to apply for lower omega limit. Okay. So ये टर्म क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा टर्म ये? नेग्लेक्ट हो जाएगा लोअर। ओके. सो अगर मुझे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखना है, रिलेटिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखना है, ओके, तो क्या करना पड़ेगा? इस टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा EL, ओके, E नॉट से, ओके, प्लस आयोटा N स्क्वायर M ओमेगा E नॉट 1 माइनस आयोटा ओमेगा टाउ। ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. ओके. नाउ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है बताइए? NR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके. अगर मुझे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज द स्क्वायर रूट ऑफ ER. ओके. सो कैन आई राइट हियर? सो कैन आई राइट हियर n plus, so ER is a dielectric constant, okay, complex quantity, so I can write this one as a n k upon square. ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, अगर ऐसे समझ में नहीं अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे टाव है? यहाँ पे, हाँ, ऊपर टाव है। ओके. सो अगर ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो आई कैन राइट व्हाट, दिस इज रियल पार्ट, ओके, आयोटा डबल डैश, ओके, और इसका रूट क्या हो जाएगा? ये दिस रिलेशन इज ट्रू, सो आई कैन राइट n plus iota k square. Okay. So this is the relation between refractive index and dielectric constant. Okay. Now in general, if I want to measure experimentally using UV visible spectroscopy, if I want to measure dielectric constant, okay, so I generally, it is difficult to, we don't measure n and k. Okay, we don't measure n and k. Instead of measuring n and k, we measure reflectance and absorbance. Okay, कोई भी material solid दे दिया मुझे, okay, so what I will do, I'll measure कि कितना लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और कितना लाइट को वो ऑब्जर्व कर रहा है. ओके. सो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेंस. ओके, रिफ्लेक्टेंस एंड absorbance. Okay, and their formulas are given by, okay, let me give one second. And सर हाँ बोलिए. हाँ, ये k क्या है? एक तो रिफ्लेक्टेंस है, रिफ्लेक्टेंस, ओके, R. ओके, इसका फॉर्मूला मैंने निकाल दिया, रिफ्लेक्टेंस. ओके, इट्स वेरी इजी फॉर्मूला, यू may have done this in EMT. Okay, so reflectance formula is what? R. Your R formula is what? R is given by, okay, n minus 1 square plus k square, okay, upon n plus 1 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या तुमने? ये फॉर्मूला EMT। हाँ, इस ओके, ये फॉर्मूला किस कंडीशन में वैलिड है? इसकी वैलिडिटी के लिए क्या क्या जरूरी है? नॉर्मल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है सर ये R. R क्या है? ये रिफ्लेक्टेंस. ओके, R is your reflectance. Okay, and alpha is what? Absorbance. Okay, 2 omega by c k. Okay, so n और k को हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं, हम तो रिफ्लेक्टेंस से कर सकते हैं ना इजीली. हमारे पास यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. वहाँ किसी भी सॉल्यूशन का, सॉलिड का, यू कैन मेजर रिफ्लेक्टेंस, कितना लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है और कितना ऑब्जर्व कर रहा है, कितना ट्रांसमिट कर रहा है, हम वो मेजर कर सकते हैं. तो वी मेजर दिस वन. Okay, and this formula is true for what? Oblique incidence. Okay, perpendicular incidence. Okay, for perpendicular incidence. Okay, correct. Okay, now I want to see the effect of this frequency in this expression. Okay, तो अगर ये true है तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए? रिफ्लेक्टेंस और अब्जॉर्बेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इक्वेशन को देखिए. ई डबल डैश की क्या वैल्यू है? इसकी तो निकालेंगे, वो तो हमने भी निकाला ना. इसको आप 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा ओमेगा से ऊपर नीचे गुणा मल्टीप्लाई कर दोगे और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का अलग कर देंगे.
रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट कर देंगे, अभी करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। अभी लो फ्रीक्वेंसी इसी से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो अगर लो फ्रीक्वेंसी भी करना है तो ये टर्म को छोड़ देंगे इधर। लो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी भी आपका ये फ्रीक्वेंसी लो है तो ये टर्म आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी ये लो है तो आपका ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा। ओके, सो सो व्हाट आई विल डू, इसको मिटा दो क्या? यस इसको मिटा सर, यस सर। हाँ आर और अल्फा छोड़ दी। हाँ, so now if I want to see low frequency, okay, what I can write, okay, my this ER, okay, differentiation, okay, this will be equal to this term, okay, that means what, n बाहर जा रहा है बोर्ड से थोड़ा। is square. So if I want to write E, okay, ER, okay, dielectric, okay, so that will be equal to what, my n is square tau, okay, m ओमेगा, खाली ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, अंडर रूट ऑफ इसको डिवाइड बाय नॉट डिवाइड, दिस टर्म विल बिकम इंपॉर्टेंट एंड दिस इज यू हैव रूट आयोटा। ओके, नाउ रूट आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट आयोटा वी कैन राइट रूट ऑफ आयोटा, आई कैन राइट दिस इज e पावर आयोटा पाई बाय 4। ओके, एंड इफ आई राइट e पावर आयोटा पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 2। ओके, so that means if I want to write ER, that will be ne square tau m omega. Okay, and this become what, this become my 1 plus iota by root 2. Okay, so from here I can say dielectric constant is equal to what, this is equal to n plus iota k, and if I look this equation I can write for this limit. Okay, for this limit, for lower limit, my n is, okay, my n is almost equal to, okay, my k, my n and k are both same. Okay, and n or k, they are very large, they are very large also. Okay, the number, these numbers very in general very large. Okay, so now you can write here value of n equals to k. So what will give, what will the value of r? सर 1 1. Okay, so if n equal to not exactly 1, okay, but we can show it's almost equal to 1. Sir, how n is equals to k? भाई यहाँ पे देखो ना, इनका Yes, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम तो है। ये क्या है, अच्छा हाँ इन दोनों को अगर आप अलग अलग करोगे यहाँ पे से कॉम्प्लेक्स और रियल पार्ट को, तो दोनों को ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। ठीक है, सो हियर आई कैन राइट n स्क्वायर, ओके, प्लस k स्क्वायर, okay, and here I can write what, this is also n square plus k square. Okay, और कुछ नहीं आएगा क्या इसके अंदर, और कुछ तो आएगी नहीं आएगी। ओके, n स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2n, सॉरी माइनस 2n। ओके, हियर यू हैव व्हाट, प्लस 2n, 1 को भी हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, and this is equal to what, okay, so n square plus k square plus 2n. Okay, so I'm writing this side. सर एक और चीज सर, हाँ सर वो एप्सिलॉन नॉट से आपने डिवाइड नहीं दिया, क्योंकि एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। वो भी कर दो, वो भी कर दो, उससे r पे क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, वैल्यू r पे वैल्यू कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा बस वो मैं हल्का सा फिजिक्स बताना शुरू कर रहा हूँ। ये डेरिवेशन का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, तो एग्जाम में ये सब पूछे जाते नहीं है, बस थोड़ा सा खत्म करने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ। ओके, सो दिस इज प्लस 2n, this is minus 4n. Okay, so n square plus k square plus 2n. Okay, now this I can write, okay, this become 1. Okay, so this n equal to k, so n square k square. Okay, so this become 2n. Okay, and here we have 4n and 2n square, so 2 से cancel हो जाएगा, n cancel हो जाएगा, so this will give me, नीचे आना और नीचे आ गया थोड़ा सा, so this will give me almost equal to 1 minus, okay, 1 minus 2 upon n. If you solve this one, this will be 1 upon 2n. Okay, now n is very large, okay, n is large, so this is almost equal to your r is almost equal to 1. Okay, so r is almost equal to 1 का इसका मतलब क्या हो गया, लो फ्रीक्वेंसी पे n क्या है, okay, लो फ्रीक्वेंसी पे your solid, okay,
behaves like reflects everything, almost everything it reflects. Okay, so this is your low frequency explanation. Okay, now we'll do high frequency explanation. Okay, so for high frequency, हाँ सर सेकंड स्टेप में आपने 1 को नेग्लेक्ट इसलिए किया क्योंकि n और k की वैल्यूज बहुत बड़ी है. हाँ yes. Okay, now if I take my ER again, so my ER was what? It was EL. सर हाँ बोलिए. सर आई हैव अ स्मॉल डाउट सर. हाँ सर लो फ्रीक्वेंसी पे इसका मतलब क्या हुआ कि जब सॉलिड में आदमी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देता है ऑफ लो फ्रीक्वेंसी तब हाँ वो हाँ लो फ्रिक्वेंसी के लिए वो पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है. लो फ्रिक्वेंसी विल बी रिफ्लेक्टेड. ओके, लो फ्रिक्वेंसी विल बी everything will be reflected. Okay, Okay, sir. just give me 1 minute. ओके सर. Okay, ये बोर्ड पूरा हो नहीं रहा पूरा. Okay, now put the heading for higher frequency limit. Okay, so higher frequency limit, what will happen at high frequency limit. Okay, so high frequency limit का मतलब क्या है? When your omega tau, okay, is greater than 1. Okay, in that condition, what is my dielectric constant? Okay, dielectric constant is my ER, EL upon E naught. Okay, plus iota. Okay, that is E naught. Okay, sigma AC conductivity. Okay, now you can put the value of AC conductivity. Okay, and solve it. If you solve this one, so this I can write ELR. Okay, like here you're putting next and dividing it by, this is also ionic relative refractive index, dielectric constant. Okay, upon iota. Okay, so if I'm directly writing, okay, it's iota omega E naught. If you put the value this one, and this will give you sigma naught 1 plus omega square tau square plus iota sigma tau plus 1 plus omega square tau square. Okay, and if you solve this one further, okay, so here omega was there, no? Here omega was there. So if you solve this further, okay, so this will give me what? E LR, okay, minus sigma naught tau E naught, okay, 1 plus omega square tau square. मैं खाली बस कॉम्प्लेक्स और रियल पार्ट को अलग अलग कर रहा हूँ. ठीक है, so E naught omega sigma naught, okay, 1 plus omega square tau square. Okay, यहाँ पर मैं सिग्मा का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सिग्मा plus iota this one. Okay, and I'm multiplying this equation. Okay, and I'm separating this real part and imaginary part in order to explain the high frequency behavior. Okay, now at high frequency पे क्या होगा बताइए. यहाँ पर high frequency पे this term one will be neglected, and this क्योंकि frequency यहाँ पे है, this term, this contribution is almost 0. Okay, इसका भी बहुत कम होगा, but this is here suppose this is your ELR. Okay, इसकी वैल्यू कितनी होती है? For example, if I take silicon, इसके लिए इसकी वैल्यू 12 होती है. Okay, जर्मेनियम के लिए 14 होती है. कुछ जैसे लो बैंड के मटेरियल होते हैं उनमें 100 के आसपास होती है. So this term is important. Okay, so what you can write for high frequency limit. Okay, for high frequency limit I can write my refractive index, okay, only is equal to real part, that is what सर मेरा नेटवर्क चला गया था सर. हाँ बता रहा हूँ. So sigma tau, okay, E naught omega square tau square. Okay, so for high frequency, I'm telling for high frequency. Okay, high frequency पे this ये inductive, इसका जो imaginary part है, that we can neglect. Okay, so for high frequency only important is real part. So why imaginary part we can neglect, sir? Here only you can see na this omega square tau square, we can neglect 1. Now here high frequency there will be omega cube. Okay, yes, omega cube, omega value is 10⁻16 omega value. सर रियल पार्ट में भी तो 1 plus पर omega यहाँ पे square ये टर्म भी तो है, और tau कैंसिल हो जाएगा. yes sir. And when you put this n square tau, okay, yes sir. वहां से ये एक टॉर कम हो जाएगा. ओके, तो इसका वैल्यू भी बहुत कम होता है, बट दिस होल वी आर कंसीडरिंग. ओके, ये तो पूरा 0 हो जाएगा. ये तो इसका तो बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाता है. ओके,
So we are taking only this one, your real part. Okay. So if you take this real Okay, part, sir. Okay, sir. okay. So if you take real part, what we can write, ER equals to, okay, ELR, okay. Now इसको कॉमन ले लो, तो दिस विल बी 1 माइनस सिग्मा नॉट, टॉ तो कैंसिल हो गया. ओके, सो E नॉट ओमेगा स्क्वायर टॉ. ओके, एंड इफ वी डिवाइड दिस by ELR also, ELR. ओके, एंड इसको मिटा दूं क्या? इसको मिटा दूं? ऊपर में और एक ओमेगा होगा ना? कहाँ पर है? हाँ, फर्स्ट लाइन पर. हाँ, उसमें ऊपर और एक ओमेगा होगा ना? ओमेगा कहाँ है यहाँ हाँ? पर? ओमेगा है क्या यहाँ नहीं, पर? उसमें कैंसिल हो गया, नहीं होगा सर. टॉ टॉ कैंसिल कैंसिल हो हो गया, गया, सिर्फ एक एक टॉ कैंसिल हो गया ना, एक एक टॉ. ओमेगा कैंसिल हो गया सर. ओमेगा ओमेगा कहाँ से कैंसिल हुआ ये? ओके ओके, सर वो आपने फिर सिग्मा नॉट. ऊपर ये- में और एक ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ना? भाई ये तुम्हारा रियल पार्ट है ना, तुम्हारा रियल पार्ट है और ये. नो सर, ठीक है सर, ठीक है. ये तुम्हारा रियल पार्ट है, ठीक है. सो इसको मिटा रहा हूं मैं. ओके, बस अभी खत्म हो जाएगा ये. नाउ इफ यू सॉल्व दिस वन फर्दर, ओके, सो दिस आई कैन राइट व्हाट, ER ELR. ओके, दिस आई कैन राइट 1 माइनस E नॉट ELR, आपका EL हो जाएगा वापस, तो सिग्मा नॉट, ओके, EL ओमेगा स्क्वायर टॉ. ओके, एंड दिस इज ELR R 1 minus, okay, this is omega p, plasma frequency, upon omega square. Okay, omega square p, omega square. Okay, where your plasma frequency Vp is equal to n e square tau upon m el. Okay, सिग्मा की वैल्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे, सिग्मा इज एन ई स्क्वायर टॉ. ओके, टॉ एम ई एल. ओके, दिस इज योर वैल्यू ऑफ प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी. देखो चेक कर लो सही है कि नहीं है. पूरा एक्सप्रेशन सही कर लेना, कैलकुलेशन आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है. फाइनल एक्सप्रेशन ये हमारा आना चाहिए, हमारा जो हाई फ्रीक्वेंसी पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका एक्सप्रेशन ये आना चाहिए. ओके, और यहाँ पर जो आई एम डिफाइनिंग दिस प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, दिस इज एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम ई एल. ओके, ना बताइए प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सर टॉ कैसे आ गया सर? टॉ से टॉ व्हाट कैंसिल इज हो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी? पहले सुना होगा ना कभी प्लाज्मा गया. फ्रीक्वेंसी का. नाउ सपोज if okay my frequency, okay, my frequency omega p, okay, is greater than omega, okay, then what will happen? यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव. अगर ओमेगा p ओमेगा से ज्यादा है, सर ओमेगा पी में टॉ आएगा नेगेटिव हो सर एक्चुअली. नेगेटिव. सर ओमेगा पी If- जो if टॉ है omega- एन स्क्वायर टॉ. okay, if omega p plasma frequency is greater than omega, तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. नेगेटिव सर. आई एम नॉट एबल टू हियर एनीवन. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर आपकी आ रही है, हमारी नहीं आ रही है आपके पास. Are you people able to hear me? I am audible. Okay, thank you. Okay, so if omega is omega is greater than omega p, in that case what will happen? My refractive index become negative. Okay, this my refractive index become negative. ये ज़्यादा है इस omega से. Okay, if this term is more than this one, then this term will be greater than 1. So I'll get my refractive index less than 0. Okay, or less than 0. Okay, so if refractive index is negative, okay, so ER क्या हो जाएगा? ER will be, if it is negative, then ER will be what? Complex quantity. Okay, so ER is equal to what? ER is equal to n plus iota k. So if ER is negative, this is your what? This will be your complex quantity. That means what? Your ER will be only depend on k. Your n will be 0. Okay, so your n will be 0 because this is a complex quantity. This is also complex quantity. So you can put n is equal to 0. So if you put n is equal to 0, then what is the value of your r? Okay, so if n is equal to 0, then your r will be 1. Okay, what is the formula for r?
फॉर्मूला फॉर आर इज व्हाट, क्या फॉर्मूला आर का, n-1 स्क्वायर प्लस, ओके, n-1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, okay, and n+1 square plus k square, okay. So what will become if your plasma frequency, okay, your plasma frequency is greater than omega, in that case this is become 0, so your r become 1, okay. That means for all frequency less than omega p your solid shows reflectance r. ये हम पहले शो कर रखे हैं कि लो फ्रीक्वेंसी पे रिफ्लेक्टेंस 1 होता है. अब लो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी लो फ्रीक्वेंसी, ओके, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है इस ओमेगा फ्रीक्वेंसी से नीचे की जितनी ओमेगा फ्रीक्वेंसी व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू योर कैरी कंसंट्रेशन, ओके, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कैरी कंसंट्रेशन. सो उस जितनी फ्रीक्वेंसी है फॉर ऑल दैट फ्रीक्वेंसी योर आर इज व्हाट, आर इक्वल टू 1, ओके. दैट मींस योर मेटल, स्पेशली मेटल, ओके, स्पेशली मेटल के लिए एन मेटल डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन वेरी हाई, okay. So for the metals your plasma frequency comes around 10 to the power minus 8, okay. So for that your material, okay, this shows almost all the lights which is less than omega that get reflected, okay. That means I can write that metal exhibits, okay, perfect reflectivity, okay. Similarly now if I go in other side, okay, सर आपका वीडियो चला गया है. सर को हम सुनाई तो नहीं दे रहे हैं. now if I see other side of the thing, if my omega is greater than omega p, okay, in that case what will happen, your er, okay, er will be positive, okay. That means this time your k is equals to 0, okay. If you put k is equals to 0, okay, then what will happen, your alpha will be 0 because alpha is proportional to k. Your alpha means alpha is absorptions, okay, and your r will be between 1 to 1, okay. That means क्या हो जाएगा, your medium acts, okay, like non-absorbing transparent dielectric, okay. So let me conclude what we have done so far, okay. So we were discussing this optical properties, okay. So optical properties means we are seeing the combined effect of this dielectric constant and refractive index. So when we see for low frequency region, we see our metals, okay, solids are show reflective behavior, and especially low frequency मतलब आपकी plasma frequency से कोई भी नीचे frequency होगी, then your solid will show reflectance, okay. And if your frequency is greater than omega, high, when you are applying very high frequency, okay, in that case what will become, absorption become very small, okay. Absorption होगा, आप क्या हो जाएगा, material आपका ट्रांसमिट करेगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट करेगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, बट absorption will be 0 in that case, okay. कोई डाउट अभी तक, यहाँ तक कोई डाउट है? सर जब ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा Okay. पी है, हेलो हेलो सर हेलो सुन सर. नहीं पा रहे हैं हमें. हेलो, ओके, हेलो हाँ, यस, एनी डाउट? यस सर, आई हैव अ डाउट. हाँ, पूछिए. सर जब ओमेगा इज ग्रेटर देन प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है, तो आपने बोला अल्फा इज 0 एंड आर इज बिटवीन 0 एंड 1, पर सर इनका सम भी तो 1 के इक्वल होना चाहिए ना? किनका? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्टेंस. आर और टी का संबंध होता है ना, अब्जॉर्प्शन का नहीं होता है, रिफ्लेक्टेंस और सर ट्रांसफर. अगर ओके सर, अगर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 0 है तो क्या ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट भी 0 होगा? नहीं, ट्रांसमिशन 0 नहीं होगा, वही तो बता रहा हूँ ना मैं कि ना, अगर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जैसे ग्लास होता है,
तो ग्लास क्या करता है, ऑलमोस्ट ऑल द चीज को ट्रांसफर नहीं करता ग्लास। ग्लासी मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो क्या करेगा, ऑलमोस्ट सारी लाइट को तो पास कर देता है। अगर आप उसका उसका अगर आप रिफ्लेक्टेंस मेजर करोगे ग्लास, अच्छे ग्लास का, ओके, आईटीओ का या कोई दूसरे ग्लास का, तो वो ऑलमोस्ट 90% ट्रांसमिशन दिखाता है। कुछ पार्ट क्या हो जाता है उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, और मैक्सिमम पार्ट क्या उसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ऑब्जर्वेशन नहीं, जीरो होता है, जीरो होता है मतलब नेग्लिजिबल होता है, इक्वेशन से निकल रहा है, फ्री मॉडल से जीरो निकल रहा है, कुछ तो ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली होगा ही, ठीक है। पर ट्रांसफर अब ट्रांसपेरेंसी का 80% 90% ट्रांसपेरेंसी आ रही है, तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि आपका जो जो वो है वो दैट इज नेग्लिजिबल, ऑब्जर्वेशन नेग्लिजिबल, ओके, बिकॉज आर प्लस टी शुड बी 1। 80% अगर आपका ट्रांसमिट हो रहा है तो 20% 0.2 आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, Yes, ठीक है। yes, sir. और कोई डाउट? ओके, सो सर हाँ, सर ये प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी को वाई हम डिफाइन किया, मतलब इक्वेशन यहाँ पर कोई टेम्परेचर का तो कोई बात नहीं हो रहा है, तो प्लाज्मा स्टेट क्यों है? टेम्परेचर का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, टेम्परेचर का बात नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, ओके। प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, ओके, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी मेटल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो, तो एसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में अब आप वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, इट विल स्विच वन, स्विच डायरेक्शन। तो स्विच डायरेक्शन में तो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो ऑसिलेट करेंगे ना, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन विल आल्सो ऑसिलेट, ओके। उसी फ्रीक्वेंसी को उसी पे उन्होंने प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिफाइन की है। अगर एक से उस जो अब अगर फ्रीक्वेंसी लिमिट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट एबल टू फॉलो दैट वन, दैट विल नॉट एबल टू ऑसिलेट जस्ट जिस फ्रीक्वेंसी से वो ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है, ओके, उस मैक्सिमम लिमिट से वो मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा है, देन दे विल नॉट बी फॉलो दैट वन, ओके, दैट इज द कांसेप्ट, ओके। सो व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ओके, जहां तक वो उसको फॉलो कर पाएगा, एंड यू गॉट योर रिफ्लेक्टेंस। सर एक बार प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी दोबारा बता दीजिए प्लीज। प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी है, ओके, जिसके नीचे आपका जो रिफ्लेक्टेंस है दैट इज इक्वल टू 1, ओके। फ्रीक्वेंसी जिसपे आपका उससे अगर कम फ्रीक्वेंसी है तो यू गेट रिफ्लेक्टेंस आर वैल्यू 1। अभी तो लिखा था इक्वेशंस में, 2 बार तो लिख दिया मैंने, इससे पहले भी एक बार बताया था। सो ओमेगा का फॉर्मूला जो यहाँ पे याद करने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो ओमेगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद करने वाली चीज है, ओके। और वो फॉर्मूला क्या डिपेंड करता है, कैरियर कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट पर डिपेंड करता है। तो जो पूछने वाली चीज है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि कैरियर डेंसिटी इतनी है, इसका इतना गुना कर दिया तो आपकी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करेगी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो भी जैम के लिए नेट वेट पे नहीं आते, इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि बहुत एलिमेंट्री मॉडल है, ओके। सो अभी नाउ दिस इज फिनिश्ड, ओके। सो ड्रिल मॉडल हमने फिनिश कर दिया है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वांटम मॉडल, ओके। अगर टाइम है तो आगे शुरू करें वरना कल करेंगे, ओके। कितना टाइम बचा हुआ अभी? कल कर दें। 5-4 मिनट बचे। हाँ, तो चलो फिर कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि अब आज तक अभी तक जितना किया था वो जस्ट क्या था, थ्योरी था। वो आपको बस एक आइडिया देना था कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है। उस पर एग्जाम्स में आपने पेपर देखोगे पिछले सालों के तो कोई क्वेश्चन आए नहीं अभी तक। तो हमको जो मेन फोकस करना है वो क्वांटम थ्योरी पे करना है, ओके। तो क्वांटम थ्योरी से ही हम लोग मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हमको करेंगे। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था ड्यूरेंट थ्योरी का, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक हीट है उसको एक्यूरेटली बता नहीं पाया, ओके। जितना बताया था उससे ये ना, हाँ, स्पेसिफिक 100% कम, 100 टाइम्स कम होती है। तो हमने पहले जब एक्सप्लेन किया था विडमैन फ्रिंज लॉ, उस समय बताया था मैंने कि वो जो एस्टिमेट कर रहा है सीबी, ओके, वो बहुत हाई है, एक्चुअली वैल्यू उससे उस वैल्यू से 100% कम होती है, तो ओके। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। So that we'll see next class how quantum theory is able to give some more answer, okay, how it is able to differentiate different materials, कौन सा कोई मेटल क्यों है, कोई इंसुलेटर क्यों है, और अदर स्पेसिफिक हीट, ओके। ऐसे क्वेश्चंस को पता करना है तो you have to go for your this band theory and your quantum theory of free electrons, okay. So now there's some chats, some things are there.
Okay, as I am not able to read this chats. Okay, जब आप chats लिखते हो ना, वो इतना बड़ा बड़ा लिख के आता है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या लिख रहे हैं आप लोग. Okay. Okay, so I'm stopping here. Thank you very much. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Hmm. Thank you, sir.